Hello friends, in this video we will discuss about the exercise number 1.4 complete questions and all the concept very clearly. We done exercise number 1.1, 1.2, 1.3 in before sessions. Now we will discuss this exercise. This is the concept of exercise number 1.4 operations on real number. Now we will discuss addition, subtraction, multiplication, division. Firstly, we discuss rational and irrational, then irrational and irrational, then rational and rational. Now we will discuss one by one. Firstly, we discuss rational and irrational. 2 plus root 2 is equals to 2 plus root 2. हम 2 को प्लस करेंगे रूट 2 से तो 2 प्लस रूट 2 ही रहेगा, उसको हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि चेंज करने का काम नहीं आएगा. इफ़ 2 माइनस रूट 2, सो दिस इज ऑल्सो सेम 2 माइनस रूट 2. 2 मल्टीप्लाई रूट 2, दिस इज 2 into root 2, it is also equals to 2 root 2. 2 divided by 2, if it is also same, root 2 upon 2 is also equals to this. And the most important thing is that it is always irrational. By doing operation on rational and irrational, if we multiply, divide, subtract, if we do anything, we always get irrational. Now irrational and irrational, if we do only on irrational, then root 2 plus root 2, root 2 is an irrational number, and if you plus the root 2 plus root 2, so this is 2 root 2. Root 2 plus root 2, 2 root 2. 2 minus root 2, root 2 minus root 2. 2 plus 2, 2 minus 2 कितना होता है 0, सो इसलिए रूट 2 माइनस रूट 2 पे कितना होगा 0 होगा. सो ठीक है. उसके बाद 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2, एंड यू शॉक दैट हाउ इज द आंसर इज 2. आंसर 2 कैसे आ गया. सो सी, हमें करना है रूट 2 इंटू root 2. So we can write that root 2 का square. Okay, so we know that square root से square कट जाता है ना, तो इसलिए आंसर क्या आ गया 2. So ऐसे if you multiply same irrational number, so then we can get same rational number, so 2 आ गया. If you divide root 2 divided by 2, root 2, this is absolutely easy. Root 2 divided by root 2, root 2 1 is root 2, root 2 1 is root 2, to 1 upon 1 it is equals to 1, so we get 1. The important thing is that it is sometimes rational and it is sometimes irrational, sometimes rational and sometimes irrational number. Irrational and irrational, always rational, always irrational, sorry, and irrational and irrational, sometimes rational and sometimes irrational. Now we will discuss rational and rational. This is very easy. 2 plus 2 4, 2 minus 2 0, 2 into 2 4, 2 divided by 2 2. Always क्या होगा rational होगा. So this is all about the concept of this exercise. Now we will discuss the questions of exercise 1.4. So okay, so now we will discuss the questions of this exercise. The questions are first question. What is first question? Okay, now firstly we discuss the first question. First question is, classify the following numbers as rational or irrational. First, 2 minus root 5. This is very easy. We know that 2 minus root 5 is equals, we can अभी हमने समझा है कि हम इसको और फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते. सो ये क्या हुआ, इसके अंदर इरेशनल नंबर आ रहे हैं ना, और हमें पता है हम इरेशनल और रेशनल को मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करते हैं तो रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे और सिंप्लीफाई तो हो नहीं रहा, तो ये क्या है इरेशनल है. ये ऐसी और पार्ट्स भी हैं, आप कर लेना. दीज आर वेरी सिंपल. लाइक वी डू थर्ड पार्ट. 2 अपॉन रूट 7 अपॉन में 7 रूट 7. 7 रूट से 7 रूट कट गया तो 2 अपॉन 7. 2 अपॉन 7 क्या है रेशनल नंबर. रेशनल नंबर क्यों है क्योंकि हम इसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, और क्यू क्यू किसके इक्वल नहीं है 0 के इक्वल नहीं है, और पी एन क्यू क्या है इंटीजर्स है. सो 2 अपॉन 7 इज रेशनल नंबर. And these are all the same parts we can do very easily. Simplify the following expressions. These are very also easy. Let's we do the fourth part of this.
fourth part. What is fourth part? Root 5 minus root 2, root 5 plus root 2. Okay, we get this. In the chapter number 2, we learned the identity that you didn't worry about it because it is the next chapter. This identity that's a plus b, a minus b is equals to a square minus b square. So here we can write that a minus b, a plus b. So using identity a plus b and a minus b is equals to a square minus b square. So it is equals to root 5 का square minus root 2 का square. So root 5 का square क्या होगा 5 पढ़ा था हमने अभी. और root 2 का square, root 2 का square मतलब क्या root 2 into root 2 and root 2 की root 2 2. So होगा 2. 5 में 3 गए, 5 में 2 का sorry 3. So we have answer 3. These are very simple. Next, now we do next question. This is a very basic question and now we cut it and we present third and fourth. We do not do question number third, question number fourth. These are concept based questions and I explain you all the concept very clearly so you can done. Question number fourth is a number line which is cut from our syllabus, and question number 3 is very easy, you can do it by yourself. Now question number 5 is very important. It comes in your exam definitely. Rationalize the denominator of the following. This is very easy, not very easy. You can do it. We can do first and fourth part. So first part we can also see from our notebook, from my notes. This is very easy and the question is 1 upon में root 7. So we can rationalize this very easily. We have to do only one thing. There is 1 upon में root 7. We have to multiply the denominator both sides. Root 7 upon root 7. So we get root 7 upon root 7, 7. So this is a rationalization. What is the meaning of rationalization? हमको rationalization में क्या करना होता है? हमको denominator को रेशनल नंबर प्रूव करना होता है कि मतलब जो इसका डिनोमिनेटर है ना उसको रेशनल नंबर बनाना होता है. तो इसमें क्या हो गया, डिनोमिनेटर क्या बन गया, रेशनल नंबर बन गया, 7 आ गया. अब समझो आपके पास क्वेश्चन आ गया रेशनलाइज करने के लिए कि 1 अपॉन में रूट 5 प्लस रूट 2. अब इसमें आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे रूट 5 को उसको इससे. इसमें एक डिफरेंस होएगा. हमने रूट 5 को तो रूट 2 और रूट 5 इंटू रूट 5 और रूट 2, इसमें हम साइन बदल देंगे. प्लस का है तो हम क्या कर देंगे माइनस. अब नाउ दिस इज़ वेरी इजी. हाउ कैन वी डू दैट? ऊपर क्या है रूट 5 माइनस रूट 2 अपॉन ए प्लस बी, ए माइनस बी, आइडेंटिटी लग जाएगी. रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, रूट 5 माइनस रूट 2 अपॉन में रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा 5 माइनस 2. सो वी गेट रूट 5 माइनस रूट 2 अपॉन 3. सो हमने डिनोमिनेटर क्या कर दिया, रेशनल नंबर प्रूव कर दिया. सो ये क्या होगा, इसकी रेशनलाइजेशन होगा. दिस इज वेरी important and easy topic. So that's all about exercise number 1.4. Now in next class we will discuss about the exercise number 1.5, which is also it is very easy. We only need it is to understand all the laws of exponents. So this is all about exercise number 1.2. These are the notes of this exercise. You can revise from here and from where you want you can do. So thank you, bye. We will meet in next video. Bye guys.